जब कोई इंसान बेवकूफ होता है ना, एंड आई मीन रियली एन इडियट, जिसमें अकल की कमी होती है, तो उसके आसपास के लोग खुद को कंसोल करने के लिए और दूसरे इंसान को दिलासा देने के लिए ये हमेशा कहते हैं कि चलो उसमें अकल की कमी है बट एटलीस्ट उसका दिल अच्छा है। एक इंसान का दिल अच्छा होना सडनली उसकी अक्ल कम होने के लिए कंसोलेशन प्राइज बन जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे आजकल मार्केटिंग के लिए स्किन केयर ब्रांड्स अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं जो उनके प्रोडक्ट की इनएफिशिएंसी, लो एफिकेसी को जस्टिफाई कर सके। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या है साइंस, क्या है स्कैम? क्या आपको सच में अपना हार्ड अर्न पैसा रैंडमली ब्रांड्स को देना चाहिए जस्ट बिकॉज दे से दे आर नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स एंड दे आर ऑर्गेनिक फॉर्मूलाज? आर दे रियली बेटर? Is it a science? Is there science behind it or is it purely a scam? Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। आज की वीडियो में साइंस और स्कैम के बीच की लाइन जो बहुत पतली होती जा रही है उसे हम थोड़ा सा वाइडन करेंगे एंड वी आर गोना टॉक अबाउट द टॉप 10 मार्केटिंग टर्म्स जो एक्चुअली मार्केटिंग की है बट इन्हें मेडिकल टर्म्स बता के मार्केट किया जाता है ताकि आपसे आपके ज्यादा पैसे ले सकें ब्रांड्स। एंड टुडे वी आर गोना डेल्व इनटू ऑल ऑफ दीज टर्म्स। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस बैक्ड डेली कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई साइंस बैक्ड वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टॉक अबाउट टर्म नंबर 1 जो एक्चुअली में किसी बहुत सयाने इंसान ने बनाई थी, एंड दैट इज मेडिकल ग्रेड स्किन केयर। मेडिकल ग्रेड स्किन केयर होता ही नहीं। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्रांड्स, हाई एंड ब्रांड्स विच आर एक्चुअली फॉर्मुलेटेड बाय अ डॉक्टर, या जो एक डॉक्टर फंड कर रहा है या एक डॉक्टर का नाम है उसमें। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर डेनिस क्रॉस, डॉक्टर बारबरा स्टर्म, देयर आर सो मेनी डॉक्टर लेड ब्रांड्स, राइट? डॉक्टर वी का ब्रांड। नाउ अगर कोई ब्रांड एक डॉक्टर अपने हाथों से भी बनाता है, जो होता नहीं है, तो भी वो मेडिकल ग्रेड नहीं होता। द ओनली थिंग दैट इज मेडिकल ग्रेड इज दैट इज यूज्ड इन मेडिसिन, एंड एनीथिंग दैट इज मेडिकल ग्रेड विल बी फाउंड इन अ फार्मेसी। तो जैसे ट्रेटनोइन, ये ट्रूली मेडिकल ग्रेड है क्योंकि ये मिलती है फार्मेसी में। एजिडर्म 10-20%, 10 नहीं, 10 ओवर द काउंटर है। एजिडर्म 20% प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड है, इसलिए आपको मिलता है फार्मेसी में, इसलिए है मेडिकल ग्रेड। स्किन केयर मेडिकल ग्रेड तभी होता है जब वो आपको मिलता है प्रिस्क्रिप्शन से या एक फार्मेसी में। उसके अलावा मेडिकल ग्रेड इज अ मार्केटिंग टर्म। हम कहते हैं कि बिकॉज एक डॉक्टर ने एक ब्रांड बनाया है अब ये मेडिकल ग्रेड है, ये उस लेवल का है, व्हिच इज कंप्लीटली अनट्रू। एक नॉर्मल ब्रांड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लॉरियल, ओले, व्हाटएवर, वो भी एग्जैक्ट सेम इंग्रेडिएंट्स लेके एक ब्रांड बना सकते हैं, अपनी एड में एक डॉक्टर दिखा सकते हैं लैब कोट पहने हुए, एंड दे कैन ऑल्सो क्लेम दैट इट्स मेडिकल ग्रेड। सो इफ यू सी मेडिकल ग्रेड written on a product that you're getting in a Sephora, you're getting in a Boots, you're getting at Ulta, save your money, it's not medical grade. Having said that, Dr. Dennis Gross के products actually बहुत amazing हैं, but they are not medical grade. Medical grade से आगे बढ़ते हैं to the word which is dermatologist tested versus dermatologist approved. हर जगह आप देखते हैं dermatologist tested जैसे कि सेराफेल, dermatologist approved जैसे कि सेरावी। क्या ये दोनों चीजें मेडिकल टर्म्स हैं? नहीं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट वेदर इट्स डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड या डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड आता है एक कॉस्ट पे। देखिए दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स पे तो बहुत बुरा नाम है कि अरे ये तो कुछ भी प्रमोट कर देते हैं, पैसे के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ऑल ऑफ दैट, एंड हाफ ऑफ इट इज इवन ट्रू। मैं नहीं करती हूँ, you know that, but in general I don't even do promotions. But in general, influencers have a bad name. But आपको क्या लगता है डॉक्टर्स कुछ बहुत बेहतर हैं? Dermatologist tested, the tag comes at a cost because dermatologists have to test the product. Dermatologist approved comes at a cost. Anything to do with any business, अगर उसमें पैसा exchange हुआ है, वो एक scientific term नहीं है, मार्केटिंग टर्म है। एंड जस्ट बिकॉज वहां लिखा है डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड डजंट मीन कि डर्मेटोलॉजिस्ट को पसंद आ गया था, डर्मेटोलॉजिस्ट ने टेस्ट किया, उसको पसंद नहीं आया, उसने डस्टबिन में फेंका, फिर भी टैग आएगा डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड। और डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड, डर्मेटोलॉजिस्ट ब्रांड का चाचा तो है नहीं कि फ्री में कर दिया। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मार्केटिंग। डज दैट मीन कि प्रोडक्ट बुरा है? नहीं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर कोई प्रोडक्ट है जिसपे डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड, द चॉइस ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, ऐसी चीजें नहीं भी लिखी हैं,
that doesn't mean the product is bad. For example, CeraVe says Dermatologist Tested. Yes, CeraVe says it's approved. Great. But बहुत सारे और brands हैं जो इंडियन फार्मेसीज में मिलते हैं, सिमिलर हैं, जिन पे नहीं लिखा टेस्टेड या अप्रूव्ड, वो भी अमेजिंग है, एंड यू मे गेट देम एट लाइक 1/3 द प्राइस. The next thing, and this one gets my goat like nothing, non-comedogenic. And everybody thinks that this is a medical term. मतलब क्या होता है? नॉन कोमोडोजेनिक मतलब कि ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा. ये प्रोडक्ट यूज करने से आपके पोर्स कभी क्लॉग नहीं होंगे. तो ब्रांड ये क्लेम कर रहा है कि 7 बिलियन लोग या 7 बिलियन से ज्यादा लोग जो दुनिया में हैं, कोई भी अगर ये प्रोडक्ट यूज करेगा किसी के भी पोर्स क्लॉग नहीं होंगे. एंड दैट इज अ क्लेम दैट नो प्रोडक्ट कैन मेक, बिकॉज टू मेक दैट क्लेम यू लिटरली गॉट टू बी गॉड. सो ऐसा तो हो नहीं सकता. ये भी एक मार्केटिंग टर्म है, और ये डिराइव इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जिनसे पोर्स क्लॉग नहीं होते. Does that mean it's non-comedogenic? No. A lot of products that you get in Inky List, Sephora, Minimalist, not Sephora, Inky List, Ordinary, Minimalist, Dr. Shades, they are also non-comedogenic. बस वो लिखते नहीं हैं, and they don't do that great a job in marketing because obviously they don't have budgets like L'Oreal. So don't pay extra just because it says non-comedogenic. और इसी का भाई is hypoallergenic, यानी इस प्रोडक्ट को लेके आपको कभी भी एलर्जी नहीं होगी. Not possible. Nobody can make that claim. Yes, अगर आप in general सेंसिटिव हैं, अगर आपको एक्जिमा है, अगर आपको रोजेशिया है, देन 100% आपको ये लेबल्स देख के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, आपको इरिटेशन हो सकती है. बट 99.9% लोग जिन्हें एक्जिमा नहीं है, जिन्हें रोजेशिया नहीं है, जिनकी स्किन नॉर्मल है, आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, या ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग अ प्रोडक्ट दैट सेज नॉन कोमोडोजेनिक, हाइपोएलर्जेनिक और नॉन हाइपोएलर्जेनिक, दैट डजंट मीन कि उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बहुत सारे ब्रांड्स हैं who don't make such tall claims and they're absolutely fine. The next one, and I think this has to be my favorite, clean beauty. That means they use ingredients that are supposedly non-toxic. And इसमें parabens भी आ जाते हैं, right? No parabens, no sulfates, etc. Paraben दुनिया का सबसे researched, सबसे stable preservative है. And parabens सारे के is a very broad term, right? Paraben is a broad term like carbohydrates. बहुत सारे forms होते हैं carbohydrates के. आलू में भी है, राइस में भी है, शुगर में भी है. Complex carbohydrates हैं, simple carbohydrates हैं. Similarly, you have 20 different types of parabens. Not all parabens are born equal. Some parabens are actually good for your skin, and today 99% of the brands are using parabens that are FDA approved. Preservative होते हैं, आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होता, आपकी स्किन पे रिएक्शन नहीं होता. But of course there are some monkeys on the internet who make parabens to be the worst thing possible. Sulfates on the other hand, yes, अगर sulfates आपके shampoos में हैं, because your hair are dead, they can make your hair more dry and उससे आपको hair fall हो सकता है. But they are not absolute demons. I always recommend sulfate-free shampoos, but it doesn't mean कि कल आपने कोई sulfate वाला shampoo use कर लिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. All I'm trying to say is parabens, sulfates, these are terms that you need to take with a pinch of salt. Understand कि इनकी concentration कम होती है, and these are not going to kill you. There is a lot of fear mongering. जितना लोग बुरी चीजें करने से नहीं डरते, उतना ज्यादा डरते हैं स्किन केयर इंग्रेडिएंट से. आई सी पीपल फ्रैंटिकली रीडिंग अप लिस्ट, एंड क्लीन ब्यूटी इज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो लिस्ट चेंज होती रहती है. अश्वगंधा, which is a herb from India, apparently is not clean enough as per the latest updated clean beauty list, and some form of DMDM जिसका नाम चेंज कर दिया है, अब वो clean beauty list में है. All kinds of things happen in America. All I'm trying to say is don't be fearful. एक पूरी industry, the whole clean beauty industry, which is billions and billions of dollars, चलेगी ही नहीं अगर आप डरोगे नहीं. So if you really don't want to overspend your money, you need to stop being fearful. You need to trust the science, and you need to trust yourself, do your research. Next thing, natural skincare. This one is another very irritating one, because there are certain brands who generally have, say, 60% natural ingredients, 70% natural ingredients, and those brands are very expensive. But when I look at brands like Mama Earth, right, which is apparently for babies, originally बच्चों के लिए था,
absolute worst kind of product, right? So drying, the worst grade of plastic. I've tried their onion shampoo, their onion entire range. Back in 2018, every YouTuber was talking about it. I've tried it all. Absolutely hate it. Right? Even agar if Mama Earth was the last shampoo available on the planet of this earth, and that was my only option, I would not wash my hair but use that product. Very tacky. And उसपे भी जितने जितने नॉन ग्रीन जितने टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स उनके प्रोडक्ट्स में है ना, it is crazy that they actually call themselves Mama Earth. Yes, they do have a few good ingredients, but overall the formulation is poor, which is perhaps the reason the company is doing so badly despite having raised so much money. Mama Earth is in a problem because लोग product को repurchase नहीं कर रहे हैं, because obviously it's trash quality. Anyways, this was not supposed to be a Mama Earth rant. Point I'm trying to make is clean, organic, naturally derived नेम के हिमालय फेस वॉश में उतने ही केमिकल्स हैं जितने किसी और के फेस वॉश में होंगे, एक्सेप्ट दैट वो एक ग्रीन पत्ता डाल देते हैं, color green hai, and you feel that you're using a natural face wash because it's green color. And that is how brands play with your mind. That is how brands play with you. So what you should be careful is not fall into these scams. Actually use a product which is good for you, which is actually delivering results. आपका स्किन बहुत ऑयली है, आपको बहुत एक्ने है, मिनिमलिस्ट या किसी और ब्रांड का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज करो. Why are you wasting your time with a Neem Himalaya face wash or any of these products which are terrible? Next, so natural skincare, unless a product says clearly, okay, we have 70% naturally derived ingredients, we have 80%, at least 50% से ज़्यादा होना चाहिए, then it kind of makes sense. Otherwise, not really. Next is fragrance free. The number of hate comments I get, especially on Instagram, when I recommend some product and agar usme fragrance hota hai, people get after me as if I've literally asked them for a kidney. Fragrance free, everybody's asking for fragrance free. What is wrong with fragrance? Fragrance is less than 1%. It is less than 0.1% in your entire formulation. Number one. नंबर 2, अगर आपको रोजेशिया, एक्जिमा या कोई और एलर्जी है जिससे आपका फ्रेग्रेंस जिससे आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, आपको 100% फ्रेग्रेंस फ्री ऑप्शंस यूज करने चाहिए. बट इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, इफ यू आर लाइक मी हु यूजेस हाफ अ बॉटल ऑफ परफ्यूम एवरी डे एंड देन यू से आई वांट फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर, दैट्स क्रेजी. आई नो द अमाउंट ऑफ परफ्यूम people use in Dubai, and I just don't mean locals, I mean यहाँ के सबको ही कुछ हो जाता है, मुझे भी कुछ हो ही गया था. I also use a lot of perfume. I know people who use so much perfume and such strong perfumes, and then they go around and say, but I want my skincare absolutely fragrance free because I can't take fragrance. How are you alive? मतलब जितना fragrance उन्होंने लगाया है उस point तो you should be dead. But that's it, because they have this whole thing in their head that if it's fragrance free, it's more luxurious, it's better, it's clean, organic, fragrance free, hypoallergenic. ये सारे terms को लोग interchangeably use करते हैं. Just because a product is clean doesn't mean it's organic. Just because it's organic doesn't mean it's natural. Clean, organic, natural, vegan, they're all different things. And it gets to me where people with zero brains talk about these products as if they are God's gift to humanity. So, point I'm trying to make, fragrance free is not a medical term. It's a product feature. And अगर आपको fragrance पसंद है तो दिल खोल के fragrance use करें. There is absolutely no problem in it. Product number 8 or point number 8 या शायद 9 भी हो सकता है, alcohol. Alcohol से लोगों को बहुत problem है, and when I'm saying alcohol, I'm not talking of beer or whiskey. I'm talking alcohol in skincare. Oh my God, it's going to dry your skin out. How? Even if it's the number 3 ingredient, how is it going to dry my skin out? Mostly you'll find it in perfume, mostly you'll find it in face washes जो 60 सेकंड में धुल जाता है, तो 60 सेकंड में मेरा face completely dry out हो जाएगा. Or maybe it is in a serum and the monkey doesn't know who's making the comment that alcohol actually allows for better penetration. So sometimes when you're formulating certain products, आपको उसमें alcohol डालना पड़ता है ताकि product better penetrate करे. सारा का सारा surface पे रह जाएगा तो point क्या है? And alcohol is not a demon, definitely not in skincare. Similarly, fragrance is not a demon, parabens are not a demon, alcohol is not a demon. 9 is Petrolatum, the good old Vaseline, जिसको लोग slug भी करते हैं और साथ ही hate भी करते हैं. That Petrolatum is so bad. Now let me say this for the last time. The Petrolatum jelly, Vaseline, CeraVe,
It is not the raw petrolatum that is in the factory, guys. There is a huge difference and बहुत फर्क होता है between, and I want to say this, there is no substitute for education, right? पढ़ाई करने का बहुत फायदा होता है because it just opens your mind, just makes you a more aware person. Petrolatum that you get in your skincare is not the crude petrolatum that you get in factories. Therefore, it is not the same thing. So don't be afraid of it. It is a great product you can use to seal in moisture. I'm not a big fan of slugging. I do slugging differently. I've made a video on it. तो आप उसे देख सकते हैं. And finally, this is my point number 10, collagen creams. L'Oreal, Olay, all of these brands are responsible for putting bada collagen all over their creams and selling a simple moisturizer for 3 times the price just because उसपे collagen है. और अगर आपने पिछले हफ्ते की वीडियो देखी थी तो अब तक आपको याद होगा कि collagen आप अपने बॉडी के अंदर डाल भी नहीं सकते. Like you can't ingest collagen, you can't apply collagen because the molecule is too large for it to be absorbed. कॉलेजन होता है जो आपका स्किन नेचुरली प्रोड्यूस करता है, आपका बॉडी नेचुरली कॉलेजन को प्रोड्यूस करती है. आप कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं जैसे रेटिनॉल, जैसे पेप्टाइड्स, जो स्किन को कोलाजन की प्रोडक्शन बूस्ट करने में या कोलाजन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करे. सीधा ही सीधा कोलाजन नहीं लगा सकते. What you end up getting in all of these creams is hydrolyzed collagen, which is basically a great humectant, much like hyaluronic acid, और सिर्फ ये आपके चेहरे को हाइड्रेट करता है. मैं ये नहीं कह रही कि इन क्रीम्स में कोई बुराई है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ that they don't deserve to sell at the prices they do because they use the word collagen and because ads में वो कहते हैं कि instantly lift करेगा, you will look 10 years younger. None of that happens. So guys, I hope I could clarify science versus scam in skincare because there is so much of misinformation going on. There is so much over-the-top marketing going on. And at the end, I just want to say that when I pick up a product to test or to use, let me tell you guys one thing. That जितनी fear mongering हुई है ना कि ये लगाओगे तो मर जाओगे, वो लगाओगे तो मर जाओगे, ये होगा तो ऐसे नहीं होता है. You know how people are dying in this world? People are dying in this world because there is a war. I am shocked that we as a species, all human beings, we have not yet self-extinct ourselves. मतलब जिस रेट से हम लोगों को मार रहे हैं, जिस रेट से वॉर हो रही है, जिस रेट से सब कुछ हो रहा है दुनिया में, we should all have been dead by now. But we are still alive and that is a miracle. That is not something we should take for granted. Fear mongering, फालतू में लोगों को डराना is just not, it's not just bad business practice. I think it's bad thing to do. So don't be fearful, be fearless. If you have any doubts about this video, ask me your questions in the comments. Jitna bhi time lagega, I will come back and make sure I reply to all of you. If you enjoyed this video, don't forget to hit the subscribe. I will see you tomorrow with a new video. Till then, take great care of yourself. Bye.